Okay, so good morning to everyone. In the last class, we have discussed about what is the class and how a class can be declared. Till now, we have done that. And we have said that class is basically the great example of, or we can say this example of the encapsulation. So declaring a class, how a class can be declared. So for declaring a class, we will write like this: class keyword should be used. First class keyword should be used. And after this class keyword, we will use the class name. So here as an example, I have taken that faculty as a class. So class name is general structure will be first class keyword, then the class name. And inside the class, what will be inside the class? Inside the class, there will be variables and method present. So here the two variables, that integer faculty ID and string faculty name. So faculty ID and faculty name are the two variables we have taken and declaring that the faculty ID is integer and faculty name as the string. So like this, a class can be declared. Now, what is the object? So basically, object is the instance of the class. Let's say we are our class in our program. This is our class, this class faculty, and inside this there are two variables, faculty ID, which is integer type, and faculty name as the string type. So this is a class present in our program. Now object is what? Object is the instance of the class. So how an object can be created? Now you see, this is our class. So for creating an object, we should use first those class object which we are creating. That class name should be first, we should give the class name. Means that particular class object we want to create, we should name that class. So here in our program, our class is faculty and we are creating that faculty class object. So that's why we have written faculty. This is the class, and this class object we are creating. So first write the class name, then this is the object name, fac1. You can take anything, the name can be anything, but the class name, that particular class which object you are creating, the name convention should be same. So here I have, in our program, I have example, as an example I have said that we have faculty class. So that's why same class object we are creating. So faculty, I have written the class name faculty, and this is what, this is the object name. Now the object name can be anything, you can use any object name. So object name is your choice, that what name you should give. Then after that, new keyword is used. Now this new keyword is what? This new keyword is used for creating the object. So you have to mention the new keyword. Either if you didn't mention the new keyword, that means the object is not created. So new keyword is basically used to create the object. And after that, the class name again with braces, So like this, a class object should be created. A particular class, which object you are creating, that particular class name, then the object name, then equal to new keyword, and after that again the class name with end it is braces. So like this a object should be created. So same as that example, you see that now there is a question that in a class, how many objects we can create? Now for a class, an object is the instance of a class. So object is the instance of a class, means we can make different objects also. For same class, we can make different object. You see that fac2, this class object we also created, same as fac1. You see, that means you see same class we are creating
different object. It is possible because object is the instance of the class. Instance means a particular instance. So that means for a same class, we can create multiple object. This is also possible. So it may happen sometimes questions given that a particular class, how many objects we can create. A particular class, how many objects we can create. So that means what? That means we can create multiple objects of a same class. This is possible because object is the instance of the class. So you see, we have created same class, different object. That is fac1 and fac2. They are different object and of the same faculty class. So it is possible. Okay. So it is clear to everyone what is class and how a object should be declared. समझ में आया सबको कि ऑब्जेक्ट कैसे हम लोग बनाते हैं? It is clear? Yes, sir. Okay. So in this faculty class, we have created two different objects. For a faculty class, we have created two different objects, or we can say two instance. We create two instance. Now, there is also a thing that with object, we in the different object, factory is another object. Now we can give different value here also. Now how it can be shown? So you see that first the two object we have created, fac1 and fac2. These two object we have created. Now you see fac1 dot id. Now dot operator is used. So dot operator is used to access the method or the variable which is present in. Now our class, what is the class we have present? Faculty class. And inside the faculty class, what are the variables present? Faculty ID. These two variables are present. Now if we want to access that variables that is inside the faculty class, then we should have to create the faculty class object, and with this object we can call, that is like the function call, like with this object we call the variables. Now faculty class has fac id and fac name, these two variables has there. So how it should be called? So if we want to access that variables that is present inside the fac class, then we have to create the object of the faculty class first, and after that with faculty class object, here first we are using fac1. So using fac1 dot id, that means faculty class object dot fac id. Here it should be fac id because the variable is fac id. So it will be fac1 dot fac id, and we are giving the value 2. Then fac1 dot fac name, because fac1 is what? It is the first object which we have created, and with this we are accessing what? We are accessing the variable that is present inside the faculty class. So here you see, using that first object, we have accessed the same variable, and here also fac2. That means with different objects, we are accessing the same variable, but we are assigning different value here. So it is also possible that with the object we have different value, with the object we have different value for same variable. It may happen. So if I show you the program, then it will be clear. So after that, again we discuss that what is the method. What is the method in a class? Now method is what? It is in Java we called it as method, but it is basically in what is the function? That is the function. Function in Java we called it as a method. So what is the general form of it? Now the same general format of a function, the same general format of the method is also like that. That you see, you have already seen that how a function is done. There will be the function name. So same as that, here also a method name, and there is a parameter. So as a parameter list, the parameter will be given to the method, and
there will be the method body present, and here will be the return type. So at output there will be the return type. So what will be the return? It will be void, in, float, all of this. Okay, so now I will show you how a program is written in Java. So the same thing, if we take the example here, that this is the class we have created. So class keyword, then the class name. Here the class name is faculty. And inside this class, inside the class, what can happen? Inside a class, we can take variable and method. So here we have used the variables fac ID, what, and its type is integer. Then fac name, we have declared fact name as a variable, and its type is string type. And there again, there is a method I have declared inside the class, that is display. This method we have display, and its return type is what? Its return type is void. Ravi Ranjan, please mute yourself. Ravi Ranjan, please mute yourself. फ्री एयरटेल हेलो ट्यून पाने के लिए स्टार और 9 दबाएं और विंक म्यूजिक ऐप इंस्टॉल करें। शंकरा तेरी क्या ही बात है, Ravi Ranjan. Okay, so that we are declaring that there will be the class name, and inside this class faculty, and this class faculty have a variables fac ID which has the type integer, and faculty name is another variable which is of string type. Now there is a method we have declared. The method we have declared inside, that is display. The method we have declared, that is display, and this display method has return type void. So it is returning nothing. So display is the method and its return type is void. Now what is the function of this method? This method is printing the value of the variables. This method working is what? It is printing the value of the variables. Now in C you have used printf, but in Java we use this as for printing the statement, that is system.out.println. What each and every keyword has some meaning. I will explain it later, but now till now you know that for this we have used for printing the values, we use system.out.println. As in C we have used just like printf function. Here we use system.out.println, and inside this we have used faculty ID, and we are first fac ID, the fac ID variables value we are printing. So this is used. Then system.out.println, we will print faculty name. We will print the value of the faculty name. So this is the class we have declared. In this class, there is a two variables present. One is fac ID and another one is fac name. One is having integer type and another one is string type. And in that class, there is a display method present. And what is the function of the display method? The display method function is printing the values of the variables. Then here for main, we will write public static void main, and inside this string A, or we can say this can be written as string args. Like this also we can write string A, string args, whatever you can write. So for main we will write public static void main, and here as a parameter we will use string args. Now what I have said, that for accessing the variable or accessing the method of a class, we should create that class object. So here you see, first we have created the object faculty F1 equal to new faculty. So first
this faculty class object is created inside the main, because in Java, if you want to access variable or method of a class, then you should have to create the object, and after creating the object only you can access the variable and methods. But there is some exceptional case also, that is for the static method. If you use some variables as a static, or if you use some method as a static, then that time object creation is not necessary. Object creation is not necessary. Other than that, in each and every case, you have to create that class object first. Now here, our object is one. What? F1 is our object. So we have created the faculty class. The value we are given variables. So f1 dot facid, this dot operator is always used. So first object name should be there, then dot operator, and after that the variable name. After that the variable name. So f1 dot facid equal to, we give the value as 1. Then f1 dot fact name equal to, we give the value as Amit. So F1, our first object through first object, we have assigned the value of the variables of fac ID and fac name. Now we have already seen that for a same class we can create multiple objects. So in this program, we will again do what? We will again create an object. We will again create a next object. Here you see we have created another object of that same class, that is faculty F2. This is another F2. This is another object equal to new faculty. And with this object, we are assigning another values in that variables. You see fact F2 dot fac ID 2, then F2 dot fac name Manoj. So we have given the value, different values for the same variables, because fac ID, fac name, they are same. So that means what? For same variable, we are assigning different values with the help of different objects. Now, first time for f1 dot display, that means for using the f1 object, we call the display method. So using this f1 method, if we call the display method, that means the value will be shown as 1 and Amit. And then f2 dot display, that means using the second object, we call the display method. In this time, the value will be shown as 2 and Manoj. So like this, a program in Java can be written. समझ में आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है इस जगह से? सर न्यू फैकल्टी क्यों लिखे सर? कंस्ट्रक्टर है क्या सर वो? ना कंस्ट्रक्टर नहीं, न्यू जो है, न्यू हम किस लिए लिखे? न्यू बोले कि हम लोगों का कोई ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करना होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम क्रिएट करने चाहते हैं, तो इसलिए मुझे न्यू कीवर्ड लिखना ही है. अगर हम न्यू कीवर्ड यूज नहीं किए तो दैट मीन्स हम लोग क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए, तभी तक न्यू हमको देना ही है. मतलब सर अगर हम सेम फैकल्टी नहीं लिख, कुछ और भी लिखेंगे तब भी न्यू यूज करना पड़ेगा? हम बोले तो कि तुम जो ये है जो सेम नाम फैकल्टी, हम तो लिखे कि ये क्लास का नेम हम फैकल्टी दिए, तुम जैसे दे सकते हो, तुम्हारा यूज से तुम जैसे जो भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. तुम जैसे क्लास नेम अलग भी दे सकते हो. इधर हम क्या बोले कि जो क्लास नेम तुम दोगे, कि ये क्लास नेम जो है ये हम फैकल्टी क्लास लिए, इसलिए मुझे, हाँ, अब जो क्लास नेम तुम दोगे उसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करोगे तो नेमिंग कन्वेंशन सेम होना चाहिए. सॉरी, इधर हम फैकल्टी किए तो इसलिए फैकल्टी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम. तो तुम अगर जो क्लास नेम दोगे, क्लास नेम क्लास का जो अलग सा नेम हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो भी क्लास दो, मगर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा. और ऑब्जेक्ट क्रिएशन में क्या है कि दोनों का सेम नेम, जैसे इधर फैकल्टी हम दिए, सेम फैकल्टी का ही ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए,
उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, यस सर। अब सर इसमें ये कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पब्लिक हाँ, ये पूरा सर पूरा पब्लिक सब हम बताएंगे, ये पूरा पूरा टोटल हम बताएंगे, एक एक कीवर्ड का क्या मीनिंग है, पब्लिक का क्या मीनिंग है, स्टैटिक का क्या मीनिंग है, वॉइड मेन का मीनिंग क्या है, सबका एक एक अलग सा मीनिंग है सबका। ईच एंड एवरी सर कीवर्ड ये हैज सब सम मीनिंग। सर सारा तो हाँ, लोअर केस में होगा ना सर, स्मॉल लेटर में होगा ना, तो वो पब्लिक स्मॉल का पी लेटर भी में, लोअर केस में होगा। हाँ, लोअर केस में होगा। उसमें उसमें ठीक। ये हम लिखे हैं, ऐसे ऐसे किए हैं, तो ऐसे कोई नहीं है इसमें, सब सभी स्मॉल केस में होगा, और जावा बहुत केस सेंसिटिव है। यस सर। तो समझ में आया कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हम लोग क्लास का कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट से मेथड को हम लोग एक्सेस करते हैं या वेरिएबल्स पे एक्सेस करते हैं। कि देखो सेम क्लास पे क्या किया, हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। ये जो फैकल्टी क्लास हम लिए थे उसका ही हम डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, और दो ऑब्जेक्ट से क्या है हम सेम वेरिएबल को एक्सेस किए विथ डिफरेंट वेरिएबल्स, सॉरी विथ डिफरेंट वैल्यूज। देखो हम फर्स्ट जब F1 जो फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट था, उससे क्या है, उससे हम एक टाइप का वैल्यू दिए 1 और ओमेगा, और सेकेंड बार जो किए, सेकेंड बार हम लोग एक और दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस ऑब्जेक्ट से भी सेम वेरिएबल को एक्सेस किए और डिफरेंट वैल्यूज दिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम सेम क्लास जो है, मेरा जो सेम क्लास है, सेम क्लास का हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और सेम वेरिएबल्स का हम लोग डिफरेंट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यही मेरा बोलना था कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यही टोटल पूरा डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है सबका? स्क्रॉल डाउन करिए ना। हम्म। यस। ठीक है, यस सर। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। Now we will move another concept, that is the concept of constructor. So now we will discuss the constructor that is used in Java. Now what is constructor? Constructor is basically a special type of method. मतलब ये जो constructor मेरा है, ये constructor मेरा एक method ही है। ये जो हम बोले कि हम लोग का क्लास के अंदर एक हम लोग वेरिएबल्स और मेथड को डिक्लेयर करते हैं, सेम एज दैट हम लोग का कॉन्स्ट्रक्टर क्या है, कॉन्स्ट्रक्टर एक टाइप का मेथड ही है। मगर ये किस लिए यूज होता है? दिस इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। फॉर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन वी यूज द कॉन्स्ट्रक्टर। ये हम लोग कॉन्स्ट्रक्टर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन के लिए। एंड इसका बेसिक डिफरेंस क्या है? इसका बेसिक डिफरेंस है कि कॉन्स्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट क्लास नेम। कि कॉन्स्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो नाम मेरा क्लास नेम जो है उससे मैच होगा। एंड कॉन्स्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइप। कॉन्स्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। तो constructor is used to initialize the object, and constructor is a special type of method which name is same as of the is used to initialize the object and it has no explicit return type. इसका कोई रिटर्न टाइप मेरा नहीं है। तो इसका दो टाइप ऑफ constructor we have used, two types of constructor we have. One is default constructor and another one is the parameterized constructor. So how it looks like? Now let's say there is a class, we have class, this is class A, we have a class. Let's say
we have two types of class, that is types, that is default constructor and parameterized constructor. Default constructor means what? There will be the no parameter present. And parameterized constructor is what? Parameterized constructor means there should be contains the arguments of the parameters. So let's say this is the class we have. This is the class ABC. Now I have the constructor will do like this. It will looks like this. Here ABC. That means you see that the name of the class and the name of the constructor are same. So it will looks like this. So class, then class name, and inside this the same name method should be present, and this method should be used to initialize the object. But in case of parameterized constructor is what? In case of parameterized constructor, the constructor will have the parameter. The basic difference is here you see there is no parameter present, but in the parameterized constructor there is parameter present. So this is the constructor. Now there are various scenarios in constructor. Like when you will do Java program, in such cases, we do not use the constructor. Now, if I do not use constructor in our program, that means that what will happen? You will think that our program will not run if we do not use the constructor. Because how then it will be initialize the object? How the object initialization should be done? But that is not the case. If there is no constructor provided in our program, then there is Java has a special form, that means Java called default constructor, and use it initialization the value of the variable. That means JVM will call the JVM is Java virtual machine used for compilation. So if there is no constructor present in our program, JVM will call the default constructor during the execution automatically. This has the special features. So that means in this scenario, if you see that when no default constructor is provided, that means when no constructor is provided, let's say we have written this program like this, that this is the ABC class, and in this ABC class, what we have done, we have used the variables here, int I, then string name, float j, double R, and we have declared this as a static. So what is the static meaning? I will say. So, but now you see that we have declared that all of the values as the static variables, declaring the variables as static. Then we have written the main method public static void main, and inside this we have written string AR parameter as the string AR. And after that we have created the object of that class. So ABC class we have, so ABC A1 equal to new ABC. So we have created the object of that class. And after that, we have printed the values of each and every variable. Now you see, in this program, there is no constructor present. In this program, we have no constructor present. So how this program will execute? So when this program will execute, JVM will automatically call the constructor. So which will then as used as a constructor, this will be looks like the constructor, because when this will use like this is the ABC. So constructor will automatically use JVM will automatically use this as a constructor. So if there is no constructor present in our program, JVM will automatically call this default constructor, and Java call the default constructor, initializing the value of the variables. So when this value will be printed, then it will show as if int I, so it will show as 0, then it will be name will be shown as null, and j, the value will be print, so it is float, and we are giving a static, so that means it will show as 0.0. And for double, in this case of double, it is also show as
0.0. So there is, you see that if nothing is declared, no constructor is declared, then also the program will run the default constructor. Okay, so this is the concept of the default constructor and the first scenario of it. Now let's say we have in the same example we are taking, and bolo Sir, बोलो थोड़ा तुम्हारा वॉइस पूरा ब्रेक कर रहा है, थोड़ा नेटवर्क का ये जगह में जाओ। सर हाँ बोलो why you use static before declaring the variable? हाँ, स्टैटिक मीन्स क्या है कि स्टैटिक हम डिक्लेयर किए। स्टैटिक जो है कि हम लोग का इनिशियलाइजेशन, मतलब स्टैटिक हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि इसका वैल्यू, ये स्टैटिक कीवर्ड जो है, स्टैटिक कीवर्ड डिफरेंट टाइप्स में हम लोग यूज कर सकते हैं। अब कोई वैल्यू के अगर हम लोग स्टैटिक डिक्लेयर किए तो इसका मीन्स क्या है कि उस वैल्यू का वेरिएबल थ्रू आउट द प्रोग्राम मेरा सेम वैल्यूज रहेगा, सेम वैल्यूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। अगर हम लोग स्टैटिक यूज कर दिए, स्टैटिक मीन्स if we declare the variable as a static, that means the value of that variable remains constant throughout the program. तो ये जो है इसमें देखो हम कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किए और वैल्यू कोई असाइन भी नहीं किए, डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली हम उसको प्रिंट कर दे रहे हैं। तो अभी जो है, अभी इसको हम स्टैटिक अगर यूज करें, इसमें कोई वैल्यू हम असाइन नहीं किए। देखो इस वेरिएबल जो हम यूज किए, इस वेरिएबल में कोई वैल्यू हम असाइन नहीं किए, उसमें सिर्फ स्टैटिक लिख दिए। दैट मीन्स कि हम लोग का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें उसका वैल्यूज जो होगा वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगा, और एकदम इनिशियलाइज वैल्यू जो है उस इनिशियलाइज वैल्यू को शो करेगा। अब इंटीजर के लिए क्या होता है, इंटीजर का जो फर्स्ट अगर हम लोग उसका इनिशियलाइज तो 0 से होता है। देन स्ट्रिंग का जो है, स्ट्रिंग अगर स्टैटिक हम उसको डिक्लेयर कर दिए तो वो नल शो करेगा। फ्लोट मीन्स व्हाट, फ्लोट मीन्स हम लोगों का 0.00 शो करेगा। और डबल मीन्स व्हाट, डबल मीन्स हम लोगों का सेम, फ्लोट और डबल का तो सेम ही कॉन्सेप्ट है, तो उसमें 0.00 शो करेगा। और थ्रू आउट द प्रोग्राम क्या है, वही वैल्यू होगा, वही वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। तो इसीलिए हम लोग स्टैटिक यूज किए। स्टैटिक कीवर्ड अगर हम लोग जो है कोई मेथड के आगे यूज किए तो उस मेथड को क्या है, हम लोग विदाउट क्रिएटिंग द क्लास उसको एक्सेस कर सकते हैं। और अगर स्टैटिक जो है, स्टैटिक हम लोग कोई वेरिएबल को आगे यूज किए तो उसका मीन्स क्या है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम उस वेरिएबल जो है उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और उसका इनिशियलाइज वैल्यू से वो पूरा असाइन होगा। तो इसीलिए क्या है, ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक देके हम किए, तो इसमें क्या है हम कोई वैल्यू असाइन नहीं किए, तो इसीलिए क्या है थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो सेम वैल्यू मेरा रहना चाहिए और वो एकदम स्टार्टिंग से इनिशियलाइज हो, इसीलिए हम उसमें स्टैटिक यूज किए। ठीक है, Yes, sir. ओके। हाँ, इसमें नेसेसरी नहीं है कि तुम भी स्टैटिक यूज करो, तुम जो भी यूज कर सकते हो, इधर हम स्टैटिक यूज किए। सेकेंड सिनेरियो जो है कि फर्स्ट सिनेरियो में देखें हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज कर प्रोग्राम में यूज नहीं करके देखे कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अगर यूज नहीं करते तो कैसे जेवीएम जो है ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते। अब ये भी हो सकते हैं कि तुम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उस एग्जांपल ये है, लेट्स से, और उसमें क्या है हम लोग उस प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किए। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइजेशन करके उसमें क्या है, उसमें हम वैल्यूज डाले। देखो i इक्वल टू 100, नेम इक्वल टू EC, J इक्वल टू 5, K इक्वल टू 3.5, F। तो इसका मीन्स क्या है कि तुम्हारा प्रोग्राम में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिए हो,
उस टाइम क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम नहीं दिए, प्रोग्राम में इनिशियलाइज नहीं किए, मगर इधर क्या है, सेम एग्जांपल भी मानो कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को दिए हैं, तो ऐसे क्या है, ऐसे उसको एग्जीक्यूशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसका आउटपुट वैल्यू शो करेगा। तो ये जो सेकेंड सिनेरियो है कि तुम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को अपना प्रोग्राम में तुम दिए हो, तो भी क्या है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा। तो it is used when user wants to initialize the variables with values other than the Java default values। तो ये क्या है, Java default values को छोड़ के कोई दूसरा वेरिएबल्स का वैल्यू देना चाहते हैं, उस टाइम क्या है, प्रोग्रामर जो है और यूजर जो है वो वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा यूजिंग दिस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, so this is the second type when user uses the default constructor। और फर्स्ट टाइम क्या था, यूजर डजंट यूज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, JVM ऑटोमेटिकली कॉल्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये क्या है, यूजर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिए अपना प्रोग्राम में, तो ऐसे क्या है, उसमें वैल्यू वेरिएबल्स को असाइन किए और उसका आउटपुट देख चुके, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, so I think the class will end now, so today I will not able to discuss the parameterized constructor concept, so tomorrow in tomorrow's class I will discuss about that, and I will explain each and every meaning of our, we will see that in hand how a first program should be done, and that how it should be written, and what is the meaning of